बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम फिर पहला सिनेरियो कर लेते हैं डॉक्टर उस्मान से, ठीक है? ओके डॉक्टर उस्मान, a 45-year male patient has presented in the emergency department with the history of severe abdominal pain, which is the pain started about 12 hours ago. It is a severe in intensity. It's associated with the nausea and vomiting. So the patient's pulse is 110 per minute. His blood pressure is 105/80. Uh, the abdomen, there is the abdomen is slightly distended. How will you approach this patient? First of all, I would like to take the history from the patient about the onset of the pain and how many episodes of vomiting he has. Is it projectile or non-projectile? What is the color of the vomiting? Okay, what are you suspecting? I am suspecting some sort of obstruction in the intestinal obstruction to the patient. Okay, what So else? and obstruction and there is some. Then I would like to rule out the cause of the obstruction and start a resuscitation. And Okay, he what can will you have do? What will you do? yes. I will first of all start give pass to like IV lines. Okay, I will resuscitation done. You have started the resuscitation. What's the next step? and then I would like to investigate. I would like to have X-ray of the abdomen and in erect and supine position to see whether there is any air fluid levels or not. And Okay, I would there no air fluid level. okay. Then I would like to have ultrasound of the abdomen to see whether there is any intraperitoneal fluid or not, and is there any is Ultrasound abdomen shows that there's a gaseous distension and there's no free fluid. okay, then I will like to do. I will continue my resuscitation and pass NG and Foley's catheter Okay, to done, decompress. done. What's the next step? And then Resuscitation done. I will admit the patient into the high dependency unit and see the response to my resuscitation. I would send baseline investigation and Which I would like investigation will you send? I will send a complete blood profile, metabolic profile, renal function test, liver function test, coagulation profile, grouping and cross matching, and electrolytes to see whether there is any. At the same time, I would like to take history from the patient to whether he is taking some medication or not, and then Patient is not taking any medications. I will ask him about any previous surgical history, whether he is any under operation, gone under operation. I would No, like there's no to. previous history of surgery. Okay, I would like to see hernial orifices. I would like to do They are DRE. intact. Okay, then I would like to do a CT scan of the abdomen, contrast and a CT scan with oral, Why do you want to and get the CT scan? to see whether there is any cutoff line or any signs of obstruction because X-ray was normal and there is Okay. a distension. So So CT scan has showed the CT you have done the CT scans. So the CT scans is slightly mildly distended bowel loops. Otherwise, there is nothing significant. okay, then I would because there is two possibilities. Either he has a true obstruction or he has a pseudo obstruction. He can have pseudo obstruction because I would also pass a rectal tube to the patient to see whether is there any gaseous evacuation from the rectum, and I would like to see the color Okay. of the NG. Okay. One of your colleague has visited the patient and he asked you, have you sent the serum for lipase or amylase? No, no, I would because patient He's has yeah. in the baseline. I would like to see the lipase and amylase level, and patient might have pancreatitis and ileus secondary to pancreatitis. And Okay. in CT scan, if there is pancreatitis, he can have because ultrasound was normal. I would also like to ask him about alcoholism, whether he is alcoholic or not, because No, he is not and I alcoholic. would contact the radiologist to tell me whether there is any inflammation of pancreas or not. No, at this time the pancreas is normal. Okay, then I will continue my assessment and I will review the labs, liver function test, Liver urea, function. creatinine, Yeah. Okay. Is urea is urea, creatinine, and sodium, potassium, calcium. urea is raised, right? What else? Okay, and what about liver function test? Liver function test of the patient. There's bilirubin is normal. Okay, then gallbladder is normal. And Yeah. what is the caliber of CBD? I would like to know the caliber of CBD, So whether it is it's distant. it's 5 millimeter.
I will see the response to my resuscitation, whether the patient is improved with. I will re-examine the patient after every 1 or 2 hours and see what is the response of the decompression, whether his pain is reduced or not. And I will repeat X-ray after 4 hours to see, and I would also keep an eye on the vital signs of the patient, whether he is improving or deteriorating. Okay, thank you, Uh, Dr. Usman. Thank you. Okay, Dr. Usman is a mileage as 1,000. Now, okay. what will next step? Okay, then it means that he has acute pancreatitis, and I would like to grade his severity of the disease. I will recollect all baselines on admission, and after 48 the response, I will make him NPO. I will give him fluids. I will give him a painkiller, and I would give him. I will monitor intake, output, and I will keep an eye on his acid-base balance. And after Okay, 48 hours, I would like to grade it whether it is mild, moderate, or severe pancreatitis. And I how would will you grade it? I would grade it by Glasgow scoring system. If it is more than 3, then it is severe pancreatitis, and it is less than 3, it is a mild pancreatitis. And Okay. then I will also So, what see are other the methods for assessing the severity? there is a glass Ransom scoring system, Apache scoring system, and CT severity index can be obtained. And according to severity of CRP, amount of CRP raised also indicates the severity of the pancreatitis. Okay. So I would also like So the to know the idea. CRP at 48 hours is 200 It means that it milligram per is deciliter. sparkly raised and it is severe pancreatitis. Now I would like to know the cause of the pancreatitis because his initial ultrasound was normal. So there can be other causes of pancreatitis. Like I would like to ask him whether he is alcoholic or not. He He is is not taking any alcoholic. he is taking any medication. He is has No. diabetes or hyperglycemia. He has any history of autoimmune diseases. He can have he can very drug induced whether he is taking any drugs No, he is not psychoactive taking any drugs. and then I will do the MRCP to rule out the anatomy whether he has pancreatic division or annular pancreas, which is the cause of pancreatitis. So And at this time you will, so the patient is, it's 48 hours. So you will get the MRCP. no, after 48 hours, once patient symptoms resolve, and Okay. So the then I will get. patient's pain is persisting. He is running fever. Patient So is it running means that fever. it means His that patient is pain is having persisting. And distension is increasing. okay, it means that patient is having infective peripancreatic infective necrosis. I will start antibiotics and I will get the CT scan to see whether there is a peripancreatic collection So or not. the CT scan, will it be a plain CT with contrast? Any Contrast specific? and I will do the contrast and CT scan and Mhm. see whether there is any collection. And I would Okay. also ask if there is any collection, then I will ask the radiologist to drain radiologically, and Mhm. it might be. Then I will send first for culture and sensitivity, So what and else information will you ask from the radiologist on the CT scan? because these patients are able to go into ARDS, so I On the will CT also scan. I would ask him to show whether there is any saponification in the Okay, peritoneum or his CT severity index is 7. okay, it means that he has severe pancreatitis. I will involve gastroenterologist. I would involve intensive care specialist because he is deteriorating, and I will admit him to ICU, and I will get help from hepatobiliary surgeon to help So me why in do you this want to case get the help from the hepatobiliary surgeon? because pancreatitis is a severe disease and it is domain of hepatobiliary surgery. So I will also So consult him. you want to shift the patient to hepatobiliary surgeon? Why? What will he do? Yes, What will he do? because no, I will not shift him, but I will get consultation from him regarding his Okay. prognosis, Okay. and I Okay. will Now you have started with the antibiotics. You have done the CT severity index is 7. And what will your next step?
I will continue monitoring his vital organ function, oxygen saturation, renal function test, and Okay. I will. So despite your antibiotics, the patient symptoms still they are persisting. So she is the patient is now it's fifth day of the admission. Um, patient is So having pain, it means right? that patient is having infective pancreatic necrosis, or infective pancreatic ascites is developing, and then I will ask the radiologist to put in a drain in the pancreatic CT guided drain, and see the response whether there is any improvement or not, and continue by conservative treatment. But if it is not improving, then we have to resort to necrosectomy with the help of hepatopancreatic biliary surgeon, because Okay. if At it is which time you will perform? At which time the patient will require the necrosectomy? if patient after 5 to 7 days, if he is not improving and continuously deteriorating, then we might need to resort to necrosectomy, and we have to put in the closed drainage system inside the pancreatic bed and remove all necrotic pancreatic tissue in order to give the drainage to the infective material. Okay. Okay. And then, okay, fine. Thank you. Thank you, Dr. Usman. Yes. आप बताएंगी अब इसमें इसमें जो यू स्टार्टेड विद स्वेरिटी आपने कर लिया कि रेंसन आपने मेंशन किया सीआरपी को मेंशन किया ठीक है देयर आर अदर स्वेरिटी जो स्कोरिंग सिस्टम है जिससे आप करते हैं ठीक है सीरम प्रो कैल्सिटोनिन है लैक्टेट लेवल्स हैं बाइसेप स्कोर है बेड साइड इंडेक्स ऑफ स्वेरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस ठीक है तो डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम है तो आपने ये क्या किया एट द सेम आपने स्वेरिटी को असेस करना है तो आपने कर लिया कि severe acute pancreatitis CT severity index is 7 the patient is not improving तो आपने you got the CT ठीक with pancreatic protocol अब उसके बाद क्या करना है कि जो पेशेंट को आपने देखें दिस इज द फर्स्ट वीक में सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी ठीक है राइट जो सेकंड उससे आगे जो आप इसकी फीवर की रीजन और भी हो सकती है वुड भी उसकी कैमला इन्फेक्ट हुआ हो थ्रोम्बोफिलबाइटिस हुआ हो रेस्पिरेटरी उसकी हो सकती है सर्स वैसे ही हो सकता है सर्स की वजह से फीवर हो सकता है ठीक है उसके यूटीआई हो सकते हैं उसकी वजह से तो इन्फेक्टेड पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस अगर उसके होगा सेकंड वीक ऑनवर्ड जो ना फिर आप शुरू होते हैं इनिशियल नेक्रोसिस विल बी स्टीराइल बाद में इन्फेक्शन डेवलप होती है तो सडनली इसके ऊपर जंप नहीं करना उसके ऊपर हमने ड्रेन करने के ऊपर ठीक है आपने बाकी कॉजेज को देखना है कि उसकी क्या रीजन क्या है जो पेशेंट को फीवर हो रहा है कि क्यों हो रहा है और भी वैसे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसकी वजह से भी हो सकता है फीवर ठीक है तो वंस यू हैव डायग्नोज या द पेशेंट हैज नेक्रोसिस ठीक है आपने यू स्टार्टेड विद द एंटीबायोटिक्स पेशेंट इज रनिंग फीवर बाकी आपने सोर्सेज देख लिए नहीं है नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस whether this patient has developed infected pancreatic necrosis or not वो किस तरह हमें पता चलेगा एक तो सीरम प्रो कैल्सिटोनिन अगर it's more than 3.5 nanogram per ml more than that will suggest that the patient likely to develop this infected pancreatic necrosis number one दूसरा CT guided FNA आप उसको ग्राम्स स्टेनिंग के लिए भेजेंगे और कल्चर के लिए भेजेंगे अगेन इसमें भी रूटीनली अभी करते नहीं कोई फॉल्स नेगेटिव इसका रेट ज्यादा है ठीक है तो आपने सस्पिशन बेस्ट और अगर आपको लगता है कि रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर फ्लूइड के अंदर एयर भी आ रही है तो दैट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस now you have established the diagnosis that patient has developed infected pancreatic necrosis and despite your antibiotic कौन सी वाली which has good penetration into the pancreas carbapenems हैं या ciprofloxacin with flagell metronidazole है ठीक है ciprofloxacin जो है ना उसके नेक्स्ट स्टेप फिर आपके आएगा जो उसको ड्रेनेज वाला है कि आप उसको स्टेप अप अप्रोच के साथ चलेंगे एंडोस्कोपिक अगर है जो ड्रेन कर सकते हैं परकुटेनियस है रेडियोलॉजिस्ट एक ड्रेन डालेगा ठीक है और कल्चर के लिए भेज देंगे अजूसेंट एक और डाल देंगे रिपीटेड ड्रेन एक नहीं दो या उसके वाइडेस्ट बोर कर दें फिर उसके बाद क्या आएगा वही सिस्टोगैस्ट्रोस्मी वाली ऑप्शंस कि आपकी वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस है देन गो फॉर द सिस्टोगैस्ट्रोस्मी एंडोस्कोपिक अगर अब टेल और उसकी तरफ पड़ा हुआ है नेक्रोसिस है
रिट्रोपेरिटोनियल डिब्राइमेंट, रिट्रोपेरिटोनियल अप्रोच से जो वीडियो असिस्टेड होती है, लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है। नेकोसेक्टमी, ओपन नेकोसेक्टमी इट्स अ लास्ट रिसॉर्ट। और कब करना है ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन कब करनी है? जितना इसको डिले करेंगे, क्योंकि नेक्रोसिस जितनी उसकी डिमार्केशन हो जाएगी, उतना ही उसके लिए आसानी होगी नेक्रोसेक्टमी के लिए। अदरवाइज अर्ली आप करेंगे, इवन 2 वीक से पहले करेंगे, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें कहते हैं 3-4 वीक उसको लेके जाते हैं, उस पे जाके ये वाले जो है ना प्रोसीजर जो स्पेशली नेक्रोसेक्टमी तो बड़ा लेट, जब जितना उसको लेट कर सकते हैं। तो सही पहले इस पे स्टेप बाय अप्रोच आप आगे बढ़ाते जाए, ठीक। ठीक है। और फिर उसके इस पेशेंट के जिस तरह से आपने जो यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपने हिस्ट्री ले ली, उससे अभी तक की कॉज नहीं एस्टैब्लिश हुई, व्हाट इज दिस कॉज। इस पे देखिए और अल्कोहल का आपने कुछ, हाँ। हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है ना विद इन 24 आपने करना है एक। अगर नेगेटिव है तो यू नीड टू रिपीट इट अगेन। दो अल्ट्रासाउंड करा लिए। आपने ये पूछना हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो नहीं थी, ईआरसीपी की हिस्ट्री तो नहीं हुई, इसकी प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई इसकी हुई भी, ठीक है। ये हिस्ट्री के अंदर आनी। सीरम कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड, अगर फिर मोर देन 1000 लेवल आ रही है, तो उस पे आ रही है उसकी, तो वो फिर बनता है ट्राइग्लिसराइडीमिया की वजह से पैंक्रेटाइटिस है ना। फिर आपने क्या करना है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, यू आर अनएबल टू फाइंड द कॉज। आपने क्या करना, नेक्स्ट माइक्रोलिथियोसिस हो सकती है, जो कि पिकअप नहीं होंगी उस पे। उसके यू नीड टू गेट द ईयूएस, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, उस पे ज्यादा बेहतर हो, या एमआरसीपी, उसके ऊपर आपको ये वाले माइक्रोलिथियोसिस जो है ना वो मिल सकती है। तो उसकी टियोलॉजी जो है ना वो आपने जरूर एस्टेब्लिश करनी है, ठीक हो गया। और इस वाले पेशेंट में जैसे सीवियर पैंक्रेटाइटिस है, अगर आपको मिल गया है गॉलस्टोन्स पैंक्रेटाइटिस है, सीवियर पैंक्रेटाइटिस, तो कोलिसिस्टेक्टमी, जब ये सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी फिर उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी, सेम एडमिशन में करके भेजिए। जब ये इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाएगी, पेशेंट स्टेबलाइज होगा उसके बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं आपको लेके आता उस पे सीवियर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस, वो द पेशेंट डेवलप इन्फेक्टिव पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस एंड दे इट बिकॉज ऑफ द माइक्रोलिथियासिस, ये मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या आपने स्टेप वाइज इसमें लेके चलना है, आईसीयू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का आपने मेंशन करना है कि इसके क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट उनको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। रिपीटेड मॉनिटरिंग है और बाकी जो सारा जो है ना इसका। और नेकोसेक्टमी तक जाता है तो ये देन यू विल रेफर द पेशेंट टू द जो आपके जो स्पेशलिस्ट सेंटर में रेफर करेंगे, प्रेफर ये प्रेफरेबल जो है ना वो करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग प्रोसीजर। तो ये हमने इसके पैंक्रेटाइटिस की हमने डिस्कस की। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, अपर जी ब्लीड उसको डेवलप हो गई है, ये सेम पेशेंट आप यू आर फॉलोइंग द पेशेंट एट ड्यूरिंग द सेकंड वीक, पेशेंट स्टार्टेड हेमेटोमेसिस, So I would देन व्हाट like विल यू to request the gastroenterologist to and do the upper G endoscopy and see if there is any gastric erosions or ठीक है। ulcer. And अगेन ये स्टार्ट विद अगेन गो टू द एबीसी कि आई विल रिससिटेट असेस द सिचुएशन, जो इनिशियल अपने मैनेज करना है ना, देन आई विल सही है, इन्वॉल्व द gastroenterologist for the upper GI endoscopy. सही है। Okay, the upper GI endoscopy shows there's a after resuscitation, the upper GI endoscopy shows there's a blood clots which are present, but there's no ulcer, there's no any source of the bleeding which is visible. Okay, then there can be a splenic it is bleeding from stomach or a patient is going in hypotension. So I would do the CT angiography to see whether there is any splenic artery aneurysm rupture or not. And Splenic artery I would rupture, pseudo aneurysm. Or pseudoaneurysm, right? At the in the pancreatic beds, yes. vessels. Okay, right? And if there is any bleeding point, then I would request interventional radiologist to do the embolization of that vessel. Embolization. Okay, okay, right. And ठीक है, ठीक हो गया। If the patient has improved and you discharge the patient after 6 weeks, patient reports back to you again and complaining of anorexia, early satiety, um, any feeling of fullness in the upper abdomen. it means So the what's the patient has most probably likely diagnosis? patient has developed pseudopancreatic cyst after 6 weeks, and then I will I'll, do the contrast CT scan to see the size of the cyst, and is there any because it is causing compressive symptoms. I will request if it is more than 6 centimeter.
then I will and causing symptoms to the patient, then I can request gastroenterologist to do endoscopic cystogastrostomy, internal drainage of the. अब इसमें देखना है, आपने देखना है कि उसकी आपने इनिशियल सीटी जो है, यू गॉट द सीटी स्कैन, तो आपने देखना है प्रेशर सिम्टम, दैट इज इंडिकेशन फॉर द इंटरवेंशन। आपने देखना है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, इट्स बिहाइंड द स्टमक। ये ड्यूटेरल वाली आपने जगह पे नहीं, ये पूछना है ना, ऐसे नहीं उसको भेज देना कि हमने एंडोस्कोपी कर देनी। आपने देखना है कि पहले उसको सीटी की फाइंडिंग देखनी है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, क्या ये अप्रोप्रिएट है एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट के लिए कि नहीं, या आपको सही। सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपने देखा स्टमक के पीछे है, जिसका तो डेब्री ज्यादा थिक नहीं है, तो वो दैट इज आप उसके कारण एंडोस्कोपिक जो ना सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी जो ना वो की जा सकती है। अगर थिक डेब्री है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको सर्जिकल करने, डिफरेंट ऑप्शन जो आपको पता ही है कि ये, लेकिन ये आपने देखना है कि ये वो पड़ी का। और साथ ही अगर इफ यू आर, उसकी पहले कोलिसिस्टेक्टमी नहीं हुई, इफ यू आर प्लानिंग अ कोलिसिस्टेक्टमी और इट्स बिहाइंड द स्टमक, देन द प्रेफरेबल इज द लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी along with the cholecystectomy। आपने देखना कि पहले इसकी कोलिसिस्टेक्टमी अभी तक हुई है कि नहीं हुई। कोलिसिस्टेक्टमी नहीं हुई, इट्स बिहाइंड द स्टमक, तो द बेस्ट ऑप्शन इज सर्जिकल। सही। तो आपने ये ऑप्शंस का देखना। फिर अगर पेशेंट में ट्रॉमा का मैं आपको नहीं दिया कि सेम पेशेंट, तो दूसरा है तो ऑब्वियसली यू नीड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द मैलिग्नेंसी, उससे भी करना है। ठीक है, तो बाकी सर नुमान भी बताएंगे, मैंने काफी बोल दिया। बस सारा एक्सप्लेन कर दिए माशाल्लाह तूने। इसमें बस उस्मान ज़हन में रखी, ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना इसकी पैंक्रेटाइटिस की, उसमें एक ग्रुप है जनरल कॉम्प्लिकेशंस का और एक ग्रुप है लोकल कॉम्प्लिकेशंस का, तो ये पता ही होगा। जी सर। वो जर्नल वाली हैं, वो जर्नली शुरू में होती हैं, जो जर्नल वाली होती है ना वो जर्नली शुरू में सीवियर में होती हैं, ये जो रेस्पिरेटरी हो गई जी सर। और अपना ये कार्डियोवास्कुलर हो गई और हेमाटोलॉजिकल हो गई वगैरह वगैरह। और जो लोकल होती हैं वो यूजुअली मतलब हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते बाद शुरू होती हैं, जो लोकल होती हैं, जिसमें ये फ्लूइड कलेक्शन साइटीज और जी सूडो सर। सिस्टम बनना और एब्सेसिस बनना। तो ये बस कॉम्प्लिकेशन की तरफ अगर वो लेके जाए ना, तो जहन में रखना कि अगर ये सिस्टेमिक की तरफ जा रहा है तो उसकी तरफ अलग मैनेजमेंट है, सिस्टेमिक में ज़्यादा फिर वही आईटीसी वाले का रोल है, इंटेंसिविस्ट का रोल है वगैरह वगैरह, और ये जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है इनका रोल है। और लोकल कॉम्प्लिकेशन में जाएगा तो उसमें मेनली इन्वेस्टिगेशन है, और फिर ट्रीटमेंट उसकी भी खुद ना करी, मेरे ख्याल में वो हेपेटोबिलिटी की मत्थे मारी। ठीक है। तो बस ये कॉम्प्लिकेशंस को एक बार रिवाइज कर लें, इसकी ढेर सारी टेबल बना हुआ है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस का इसका हाँ, pancreatitis का। तो ये लाइकली है, ये सिनेरियो ना एग्जाम में जो ना, ये पैंक्रेटाइटिस इन इमरजेंसी लाइकली है कि ये हो सकता है आएगा उसमें। लाजमी। हाँ जी। और बिल्कुल। जिस तरह शफाकत ने बताया ना, कॉज जब तक नहीं मिली आपने कॉज रूल आउट करती जानी है, सारी जेन में लाएं, सारी कॉजेस। सही है। इवन स्कॉर्पियन बाइट भी लिखी हुई है हम्म, कॉज, तो वो भी पूछें कि कोई बाइट हम्म, शाइट तो नहीं हुई। हाँ जी। तो सारी कॉज रूल आउट करके फिर उसको इडियोपैथिक लेबल करना है। हो सकता है वो कॉजेज में घुसा दे इस तरह की, इसकी कॉज ढूंढो कि क्या है। हाँ देखा मैंने भी माइक्रोलिथियासिस का बनाया था। माइक्रोलिथियासिस किस चीज में नहीं आना सारी, अब यही था मकसद, ये था कि अब सारी मुझे कॉजेज बताएं, हम्म। हम्म, ट्यूमर जो हो सकते हैं। ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, ट्यूमर हो सकते हैं, ट्रॉमा हो हम्म, सकता है, ये हम्म, मेटाबॉलिक हो गए आपके, हम्म, मेटाबॉलिक कॉजेज जो हैं। बिल्कुल सर। और बाकी बता दिए, गोल स्टोन, अल्कोहल वगैरह, और मम्स हो गए। हम्म, ये वायरल चीज़ें, इन्फेक्शन। बिल्कुल। ड्रग्स हो गई, ड्रग्स तो मैं खैर बता दिया था। तो बस हाँ, ये इंशाल्लाह रिवाइज करता जा, अल्लाह खैर करे। चलो मैं और आपका दूसरा बाकी है वो आज मुबारस वाला। बस कुछ आधा हुआ है, अभी आधा चल रहा है अभी साथ साथ। अभी अच्छा, दोबारा देखते हैं अभी। ठीक। तो वो बस उसको रैंडमली मेरे ख्याल में जिधर जो फिट आता है करते जाए, मुझे तो यही हाँ समझ फिलहाल आई है। करें, फिर वो ऑब्जर्वेशन लगा के भेजेंगे तो ठीक है। चलिए सर, अभी आप पूछे उस्मान से सेकंड A सिनेरियो। 40 years old male patient has reported in emergency department with the complaints of fever along with loose motions containing blood for the last 3 days. How will you manage this patient? What is the age? Sorry, sir. 40 years. 40. Okay. First of all, I will like to get the history from the patient. What is the frequency of the stool? What is the color of a stool? What is the color of blood inside? It is fresh blood or it is brownish in color, or there is associated mucus discharge? And is this watery stool or mucoid? Then at the same time, I would start a resuscitation of the patient.
I will pass two large IV lines. I will give fluid to the patient and take samples for blood. The stool contains fresh blood and stool contains fresh blood. What else question you have asked about stools? What is the frequency of stool? What is the amount of bleeding and mucus in the stools? And There are 6 to 7 episodes per day for the last 3 days. okay, I will ask him about abdominal pain, whether he has abdominal pain, distension, He has nausea. he has Okay. intermittent episodes of generalized abdominal pain. Okay, I will ask him about previous medical or surgical history, whether he has any previous history of similar episodes. He has history of weight. He is having these similar episodes for the last 15 years. Okay, it means that I would also ask him about history of weight loss. I will look his general condition, whether he is emaciated or not, and I will continue resuscitation. There is And weight loss. He reports some weight loss of 5 to okay, 6 I will. to 3 Okay, years. I will admit the patient in high dependency unit and continue my research. What is your provisional diagnosis? My provisional diagnosis is either he has ulcerative colitis or diverticulitis, or he has carcinoma, colorectal carcinoma, and he can have aortoenteric fistula, or he can have angiodysplasia. These are one of my diagnosis. I will, with working diagnosis, I will try to investigate the cause of the bleed. How will you I will get. investigate? I will first of all do the examination. I will do digital rectal examination. Then I will do proctoscopies to see any How will you hemorrhoid. investigate? How will you investigate? And I will do the laboratory investigation and radiological investigation and colonoscopy. In laboratory investigation, I will send a blood complete profile and tumor markers. And I will request gastroenterologist colleague to do his after I have done my proctoscopy and colonoscopy and sigmoidoscopy. I will request gastroenterologist to do the colonoscopy and see the source of bleed. Is there any Gastroenterologist, polyps? gastroenterologist refuses to do colonoscopy and says that let the patient get better. What will you do now? Okay, okay, then I will get the contrast enhanced CT scan of the abdomen to see whether there is any tumor or mass, and I will see the progression whether the bleeding stops or not with the resuscitation. Okay. What And else? So uh, you do. uh, then I will again request the gastroenterologist that he should try to localize the source of bleed. If it is not possible, then I can have uh, uh, technetium labeled. The Yes. CT scan shows diffusely thickened large intestine, and other than that, there is no significant finding. Okay, it means that a patient has probably either ulcerative colitis or he has a diverticulitis. So I will give antibiotics and see the response, and try to localize the bleed with the help of radio labeled RBC scan if there is if it is available. And The patient's bleed is getting better, but he is getting toxic with swinging episodes of high-grade fever along with abdominal distension. What will you okay, it do means now? that patient is probably developing toxic megacolon, and I will do the X-ray, repeat the X-ray of the abdomen and see whether the distension has increased on radiology, and if the lumen of the large gut is increasing. So I will plan discuss the case with the colorectal surgeon and plan surgical surgery in this patient. And I will first. What diameter are you looking for in the X-rays? I would, if diameter is more than 6 centimeter of the large intestine and 10 centimeter of the cecum, then it is indication for surgery, and patient is not improving, and patient can have perforation. If the patient symptoms are not improving, he might land up in perforation. Okay, So I will. you have you are doing laparotomy and you have opened up the patient. What procedure would you like to do in this patient? Because patient has a toxic megacolon, so I will do
depending upon the extent of dilatation, if it is totally dilated, whole large intestine, then I need to have total colectomy with and ileostomy, as surgical and distal stump will be closed as uh, Hartmann closure procedure. Okay, so what? Okay, afterwards, the patient after surgery, the patient gets better and he's discharged, and you follow up, call him for follow up after 1 month. So after 1 month, he has reported. What will you do now? What will you ask him? What will you do now? Now I will also take gastroenterologist on board. Emergency is over. Now we will plan treat his condition. I will do the colonoscopy of the rectal stump and see whether there is involvement of rectum or not. If the involvement of rectum and I will build up the patient, his nutrition. I will take care of his nutritional status and plan revisional surgery and discuss this case in multidisciplinary team in which a stoma care nurse, Okay, stoma suppose therapist. okay, suppose the patient is not willing for any further surgery. What will you advise the patient then? Because I have done colectomy, I have not removed the rectum, and chances of disease in rectum persist. So I will arrange a yearly follow-up of this rectal stump. I will refer this patient to the gastroenterologist to do the surveillance colonoscopy, proctoscopy of the rectal stump to see whether there is any malignant change in the stump or not, and give him 5-aminosalicylic acid enema to locally control the disease and control extraintestinal manifestation. Okay, the patient is now willing for surgery. What preparation will you do, and what surgery will you offer him? And there are multiple options because patient is young, and I will discuss pros and cons of different type of surgery. I can offer him. I will refer him to colorectal surgeon for total proctectomy and ileoanal pouch anastomosis, and he can also have. But the risk of total proctocolectomy is that he can have. I will counsel him regarding loss of sexual function, and there is damage to the pelvic organs. And their other option is he can continue his life with ileostomy, or he can have ileorectal anastomosis. There are multiple options, whatever patient. Okay, And so planning this surgery, what pre-op preparation will you take? I will make the patient. I will optimize the patient by giving him good nutrition, because these patients are malnutrited, and because they are taking immunosuppression and steroids. So it has to be stopped 1 month before the surgery because it will impair healing. And I will uh, uh, The uh, uh, patient is also taking steroids. Would you like to continue them, or no, it has to be stopped 2 weeks before surgery, 10 to 2 weeks before surgery, and because it will impair the healing process. And after that, he can continue. And I will refer this case to the colorectal surgeon who can offer him pouch procedure or restorative surgery. okay, you have done the surgery. The colorectal surgeon has done the surgery. Now it is fifth post-op day, and the patient has developed high-grade fever for the last 1 day, Okay. and he has a toxic look. What will you do now? What is Okay. your plan? It means that patient has developed some sort of an anastomotic leak. I will admit the patient. I will start resuscitation. IV fluids, make him NPO, and I will get contact the previous surgeon, get his operative notes, and see what operation has he done. And probably there is an anastomotic leak, so I will get the CT scan, contrast and CT scan with rectal contrast, CT scan soluble water soluble contrast to see the any anastomotic leak and intrapelvic collection. If there is any collection, I will. CT scan shows a collection of about 200 ml in the pelvis. Okay, then I will request the radiologist to put in a drain, and I will contact that colorectal surgeon who has operated upon him to take over the case. And he patient might need proximal ileostomy, or he might need some revisional surgery and take down of anastomosis.
or if a gastroenterologist can put in a stent, across the anastomosis, and we can do proximal ileostomy as a covering stoma to give healing time to the anastomosis. Okay, thank you. चले शफाकत, पहले तू ऑब्जर्वेशन बताओ। अच्छा, मैं जो चीजें ऑब्वियसली जो कि कौन कौन सी है ना पॉइंट्स जहाँ पे आप उसको पहले नोट किए हुए हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टार्ट में जो डायग्नोसिस था कि ब्लडी डायरिया का नहीं, पेशेंट 6 एपिसोड्स हैं, लूज मोशंस हैं। तो आपके Sir. बीच में एक जो जब हमसे पूछा गया एग्जामिनर ने व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग, तो उसमें एक है इंटायरिक एओर्टो इंटायरिक फिस्टुला। सो व्हाई वर यू सस्पेक्टिंग एओर्टो इंटायरिक फिस्टुला इन दिस पेशेंट? It was one of my differentials. It was in the last differentials because it is one एओर्टो of the causes इंटायरिक of. फिस्टुला विल प्रेजेंट विद अपर जीआई ब्लीड ज्यादातर, Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब ये पेशेंट यंग 40 ईयर पेशेंट है, लो जीआई ब्लीड के साथ आ रहा है, और इसके रिपीटेड 3 डेज की हिस्ट्री है ना, सिंपल। ठीक है, Sir. उसमें और फिर उसके बाद फिर जैसे आप एक दो चीजें पूछ रहे थे बड़े आसानी, जल्दी से आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। उसमें पूछते कि प्रीवियस हिस्ट्री उन्होंने पूछा है कि 15 ईयर से है, तो उसका प्रीवियस एनी प्रीवियस वर्कअप हैज बीन डन और नॉट, तो प्रीवियस को कोलोनोस्कोपी हुई है इस पेशेंट की नहीं हुई। ठीक है, कोई इज दिस पेशेंट टेकिंग एनी ड्रग्स, आप स्पेसिफिकली पूछ, आपको डायग्नोसिस उसी वक्त क्लियर हो जाता है, तो वो आपको मिल जाए हाँ जी पेशेंट ये ले रहा है, ऐसा को ले रहा है, क्लियर होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस 15 ईयर से चल रहा है। ठीक है, अब पेशेंट आया नो इमरजेंसी में आया, तो आप देख रहे हैं ये फुलमिनेंट कोलाइटिस, ये आपका रोटेट हुआ है, ये जो स्क्रीन है ना। जी सर, वही मैं देख रहा हूँ कैसे रोटेट हो गया ये। हाँ, तो आपको जो ना डायग्नोसिस जो ना वो जल्दी जो ना आपको पिक कर लेती है। फिर अगेन इट्स एक्यूट इमरजेंसी, तो उसमें आप इन्वॉल्व द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फॉर द कोलोनोस्कोपी। आपने ये जो पेशेंट है इसमें कोलोनोस्कोपी नहीं करनी, एक्यूट स्टेज है ना, कि 3 डेज की सडन हिस्ट्री है, उसका नंबर ऑफ एपिसोड आपको बता दी कि 6-8 एपिसोड है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कहते हैं एक्सरे एब्डोमेन टू बिगिन विद, कि इसकी बाकी सही है। वाइटल से पूछते हैं कि व्हाट आर द वाइटल साइंस, पेशेंट की लुक कैसी है, उसकी एब्डोमेन कैसा है, इज देयर एनी जनरलाइज्ड टेंडरनेस, कोई साइंस तो नहीं है, टैकीकार्डिया तो नहीं है। सही ठीक है, ताकि आप उसके फुलमिनरी कोलाइटिस की तरफ जाते हैं उसकी लाइन के ऊपर। और इसमें जो साइज सही है ना वो दैट इज 6 सेंटीमीटर, कोलन कट ऑफ साइन जो है, सही है। कट ऑफ जो है उसका 10 ये सेंटीमीटर नहीं, ट्रांसवर्स 10 सेंटीमीटर सर। कोलोन का साइज है ना, सर ये 6 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स कोलोन का देखते हैं ना। कोलन, हाँ को हाँ ट्रांसफर को 6 सेंटीमीटर, इसमें वो नहीं है 10 सेंटीमीटर सीकों को देखना है, 6 सेंटीमीटर इसका है। अगर राइजिंग ठीक है। पल्स है, पेशेंट राइजिंग है, उसके सिम्टम आपको टेंडनेस पेशेंट को डेवलप हो रही है, ठीक है, या इवन स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो वो दैट इज अ साइन ऑफ आईलीएस। तो ये नहीं है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, तो आपकी इंडिकेशन हो। सही है। फिर उसमें ये है कि जब ये कहेंगे जी अच्छा जी वंस यू हैव मेड द डायग्नोसिस यस दिस पेशेंट प्रॉब्ली हैविंग टॉक्सिक मेगा कोलन, तो स्ट्रेट अवे उसको नहीं कि हम उसको जंप कर देंगे कि उसको कर दें, एग्जामिनर से पूछें व्हाट इज द साइज, एक्सरे पे क्या साइज है। ठीक है, सडनली आपने उसको नहीं दे गया आना कि मैं सर्जरी कर दूंगा। ठीक। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, यू नीड टू इन्वॉल्व द क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मेडिसिन को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, वो अपनी मैनेज मीनवाइल आप क्या करें, इसको मॉनिटर करते जाएंगे विद सीरियल एक्सरे क्लोज मॉनिटरिंग के साथ। फिर उसको कहें अगर बीच में डिटेरियोरेट करेगा तो देन दिस पेशेंट विल रिक्वायर द इमरजेंसी लेप्रोटमी। ठीक है, अब ठीक। जब आपने लेप्रोटमी कर दी, लेप्रोटमी में आपने सब टोटल कलेक्ट नहीं कर दी विद सर। इलियोस्टोमी। ठीक है, दैट वाज करेक्ट ऑप्शन, आपने सही किया। अब बाद में जब आपको कहा कि अब क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, अब आपके पास आए क्या करेंगे, देन यू आई नोटिस आपने कहा कि इसकी रीजनल सर्जरी में प्लान करूंगा, आपकी क्लोनोस्कोपी कराऊंगा रेक्टल स्टम्प की। उसकी मुझे समझ नहीं आई थी, आपने सिंपल कहना था आई विल गेट द हिस्टोपैथ रिपोर्ट, उस पे क्या उस पे आ रही है। अगर इट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस तो दैट मींस क्लियर कट आपने रेक्टम को निकालना है, इट्स अ क्रोन्स तो फिर रेक्टम उसकी प्रेजर, फिर आईओ रेक्टर नेस्टोमोसिस। रेक्टल स्टम्प की क्लोनोस्कोपी नहीं है, आपने क्या हिस्टोपैथ रिव्यू करनी है, हिस्टोपैथ को देखना है, ठीक। उसके ऊपर फिर डिसीजन है। ठीक है ना, कि क्या सही है। क्या सर्जरी होगी, रिस्टोरेटिव होगी या जो रेक्टम जो है निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, सही है। और बाकी तो फिर उसके बाद वाला सिनेरियो था कि आपके एब्सेस के साथ जो है ना दी गई एब्सेस है,
तो वो तो ठीक है, वो तो आपने परक्यूटेनियस ड्रेन डाल लिया, बाकी चीजें कर ली। तो ये मेरे ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो इसमें वो लगाना है जो मैंने बताया, स्टेंट डालने हैं, ड्रेन डाल के स्टेंट डालने हैं, और इसमें प्रोक्सिमल है या इसमें आप अर्जेंटली टेक डाउन कर देना एनास्टोमोसिस को, या वेट करना है इसका नहीं ड्रेन नहीं डाल के? देखिए अगेन फिर एग्जामिनर से पूछेंगे व्हाट इज द पेशेंट कंडीशन, उसको कहेंगे हीमोडायनामिक स्टेटस उसका कैसा है, पल्स कैसी है, जनरलाइज कोई पेटनाइटिस के सिम्टम्स हैं कि नहीं है। अगर वो कहते हैं ठीक है, जनरलाइज पेटनाइटिस के सिम्टम्स, देन पेशेंट ऑब्वियसली विल रिक्वायर री एक्सप्लोरेशन। ठीक, अगर कहते हैं जनरलाइज पेटनाइटिस नहीं, यस ही इज रनिंग फीवर बट देयर इज नो जनरलाइज टेंडरनेस, so you get the contrast and CT scan to see where the collections. If there's a collection, you need to put in the drain with antibiotics, उसके साथ आपका चलेगा। ठीक है, अगर फिर नहीं हो, सडनली आपने स्टोमक ऊपर नहीं चले जाना, उसको टेक डाउन और एनास्टोमोसिस को टेक डाउन कर देना। ठीक। वो अच्छा आपने किया, अगर प्रीवियस नोट्स उसके देख लें, क्या सर्जरी हुई थी, क्या हुआ था। ठीक है, हम्म, तो ये मेरी तरफ से, बाकी सर नुमान और कुछ ऐड कर। नहीं ठीक है, शफाकत ने कवर कर दिया। यही डायग्नोसिस तूने ज्यादा लोअर जीआई ब्लीड पे ले गया, जबकि लोअर जीआई ब्लीड कम और ये आईबीडी ज्यादा थी। और इसके अलावा सही। इन्फेक्टिव कोलाइटिस की कॉजेज उसको रूल आउट करना, तो इट कुड बी हाँ बिकॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप उससे जो इन्फेक्टिव कोलाइटिस है उसकी वजह से आपने स्टूल कल्चर उसके भिजवाने थे इसके ना, इसके एंटीबायोटिक का पूछना था, पेशेंट सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने उसको वो भी देखना है, मे बी कोलाइटिस हो सकता है पेशेंट, उन चीजों को भी अपने माइंड में रखना है। बाकी वही है कि फॉरेन इमरजेंसी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बस वैसे ओपिनियन ले लें, लेकिन कोलोनोस्कोपी ना फॉरेन उसको रिक्वेस्ट करें, और इमरजेंसी में बस रिससिटेशन करें और उसको कंजर्वेटिव कोशिश करें मैनेज हो जाए। और सही है। इसकी इमरजेंसी में सर्जरी जाएगा परफोरेट कर देगी वो, तो कोलन जो है क्या करें? मैं क्यों परफोरेट कर देगी, अगर इस पेशेंट में कोलोनोस्कोपी आप करवाएंगे तो इट विल परफोरेट। अच्छा, लेकिन लोअर जीआई ब्लीड में तो हम करते हैं ना कोलोनोस्कोपी, अगर हाँ सर, सिर्फ लोअर वो तो है ना पेशेंट, अब जिस तरह ये सिनेरियो है आपका एक्यूट, उसमें ब्लडी डायरिया के साथ आ गया, और प्रीवियस इसके वो चल रहे हैं एपिसोड ना, और फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स से चल रहा है ये प्रॉब्लम ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है कि 15 ईयर्स से तो इसका डायग्नोसिस पहले कोलोनोस्कोपी हुई होगी, कोई ना कोई ट्रीटमेंट इसकी चल रही होगी। ठीक है, और जो हमें जो एग्जाम में भी सिनेरियो इस तरह मिलेगा कि जब आप पूछेंगे जी पहले ये पेशेंट है नोन केस अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और वैसे अगर पेशेंट आ जाता है कि जी प्रीवियस कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो आप सस्पेक्ट करते हैं, नहीं जी अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली उसके साथ चलेंगे, और उसमें ये देखनी है कि उसके कुछ बाकी फीचर्स तो नहीं है, फल्मिनेंट कोलाइटिस वाले फीचर्स तो नहीं है, फिर सही। क्लोनोस्कोपी बाकी चीजें उसमें आएंगी ना। और इसी तरह आरबीसी स्कैन वगैरह वो उसमें चला गया ना लोअर जे ब्लीड की तरफ ना, ये उसका सिनेरियो है। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, जिस तरह शफाकत ने बताया, हिस्टोपैथ आपने लाजमी देखनी है, और हाँ, बाकी हिस्टोपैथ pre-op लाजमी देख। बाकी प्री ऑप तूने बता दिया, ठीक है। न्यूट्रिशनल बिल्डअप मेन होती है, और ये ड्रग्स बिल्कुल। रुकवानी होती है पहले, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टीरॉइड्स, और ठीक है, बाकी ठीक था मेरे ख्याल में। तो चलें ठीक है सर, आज का फिर खत्म करते हैं, फिर कल फिर चलो इंशाल्लाह। सर, ओके, ठीक है, थैंक कल यू, का अस्सलाम क्या वालेकुम। थैंक यू भाई, कल का अस्सलाम क्या वालेकुम।